4 workers were removed from the factory, due to which 1,10,000 workers went on strike, and they wanted to show that procession, that protest to the Tsar Nicholas II. So they all went over there in the Winter Palace, and they were attacked by the police of the Tsar, and because they were killed, they were wounded. So that is why it is known as the Bloody Sunday. Now, consequences that we discussed yesterday in one of the class, strikes took place all over the country, because this message went to all other parts of the country as well, that this is the action being taken up by the Tsar and the army or the police of the king. So the strikes took place all over the country. Universities, we discussed that they closed down, as the students also walked out complaining about the lack of civil liberties that they were facing in the universities. Lawyers, doctors, other also middle class, they also started having the unions of unions. So basically the associations which we talked about earlier, jo hamari workers association which we were talking about, that they were, though there were the divisions among the workers of Russia, then also they were under certain associations. So these type of and because of these association only, these workers were able to protest. अगर एक साथ कैसे आएंगे? Because of these associations only. So people all over the Russia, lawyers, doctors, and every other person, they started getting an idea of benefits of being in the association. So that is why they started making the unions, and unions of the different, whether the lawyers were there, doctors were there, middle class was there. So different type of people also started forming the union. So this is one of the consequence of that Bloody Sunday. Now, demands of the protesters, because these were the workers mainly. When we talk about the Bloody Sunday, it was initiated by the Workers Association. So definitely the demands will include the demands that we did earlier also, the workers gave common demand. That demand was, they demanded a constituent assembly, so that politically also they want to enter in the decision making. Increase in the wages, which is a normal demand of the workers. Reduction in working days to 8 hours. Earlier, how many hours were there? How many hours the workers and the craft person were working, which we discussed in the 15 to 16. 12 to 13. 15 hours. Right, both the answers are correct. As the traditional craft persons, जो वो लोग काम कर रहे थे, they were being said to work around 15 hours a day, and the factory workers, those who were there, they were working around 12 hours or 13 hours in a day. So they wanted to reduce that to 8 hours. Improvement in working conditions also, that was their demand. So it's again, if I talk about, it's a repetitive slide जो हमने पहले की है, तो एक ये repetition है. Now, moving ahead, जब इतना बड़ा revolution, इतना बड़ा एक revolution सा start हो गया, people everywhere. If you think in respect of monarch, अगर आप monarch के बारे में सोचो, in the histories of monarch के against लोग कभी खड़े होते ही नहीं थे. They never used to criticize monarch. So they were not having that kind of experience. जैसे हम democracy में हम face करते हैं, all the governments have this experience that some due to some or the other reason, they will be able to, मतलब they will be facing any kind of protest. ये democracy में तो governments expect करती है. But monarchs, what about monarchs? They never expect this and never allowed it also. So for the Tsar at that time, it was very upset kind of condition for him, that people are now criticizing his rule. That is why what he did, उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे changes तो करने ही पड़ेंगे. Whenever there's, जैसे हमने French Revolution में देखा था, conservatives never believed in the changes, but when they have observed that people are now protesting against your rule, so you have to make some of the changes. Same way here also, the Tsar during 1905 revolution, Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament, which was named as Duma. Duma is the parliament, the name of the parliament in Russia. So he accepted it. जो उनकी सबसे पहली डिमांड जो अभी हमने previous slide में देखी थी,
this one demanded a constituent assembly. This particular demand Tsar accepted, but he was also very clever. He was not, he didn't allow the people to work properly in that parliament, but at least has given this message to the people of Russia, all the citizens, that I have accepted your demand. So I am expecting that your this protest should also end right now. So protest को end करने के लिए very cleverly he accepted that parliament and he made a parliament, representative parliament बनाया, elected parliament in which was known as Duma. So severe restrictions were placed on the political activities क्योंकि ये इतना criticism हो रहा था, इतना मतलब उसने फेस कर लिया था ज़ार ने, that he said कि और ज़्यादा एक political criticism को रोकने के लिए I have to put more restrictions. So he, though he accepted that parliament, but he started restricting this kind of criticism. Okay, so because of that, committees and unions that were formed by the people were declared illegal under his rule. So ये एक उसने लोगों को दिखाने के लिए पॉजिटिव स्टेप लिया और उसके साथ उस एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए ये एक नेगेटिव स्टेप लिया. Any doubt till here? Then moving, fine. Then moving to Tsar was clever. So what he did, he has formed the Duma. He accepted the Duma, and Tsar dismissed the first Duma within 75 days. पहले ही 75 days के अंदर उसने due to giving any of the reason कि these representatives are not working properly, ये decision making गलत हो गया, ये बहुत सारे n number of illogical reasons were there which he could have been given at that time जो भी मीटिंग होती थी. So he dismissed 75 days के लिए ड्यूमा बना, लोग भी थोड़े से खुश हो गए, थोड़ा बहुत इलेक्शन के थ्रू लोग आए, representatives आए. So they started working in the parliament and then immediately after 75 days they saw कि ड्यूमा को डिसमिस कर दिया. उसके बाद री-इलेक्शन किया, फिर री-इलेक्टेड अगेन द सेकेंड ड्यूमा और उसको within 3 months again he dismissed. Pehla first Duma was dismissed in 75 days. Second Duma was elected and it was again, it worked for 3 months and again that Duma was also dismissed. Okay. Then he changed the voting laws. क्योंकि अभी भी power तो crown के हाथ में थी ना. It was only monarch who was voting there. So he changed the voting laws and packed the third Duma. जो third Duma बनाया उसने, very cleverly what he did, उसने कुछ voting rights को change करते हुए nobles के हाथ में राइट्स को देते हुए ज्यादा उसने नोबल्स को थोड़ा सा सपोर्ट किया इसमें, ताकि जो जब नोबल्स इलेक्ट करेंगे तो दे विल बी इलेक्टिंग द नोबल्स ओनली. सो व्हाट ही डिड, उसने थोड़ा वोटिंग राइट को चेंज कर थर्ड ड्यूमा को इलेक्ट करवाया एंड विच वेयर इन मैक्सिमम वर द कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन. ठीक है, क्यों चाहता था वो वहां पे कि कंजर्वेटिव्स आ जाए, बिकॉज कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन, conservatives किसके बिलीव करते थे, which philosophy, which aristocracy, that the laws right, aristocracy, monarchy, autocracy, इसी में बिलीव करते थे वो. तो as he was a monarch, he was an autocrat, so he wanted the similar type of people, of the people, those who believed in the same ideology, to come in the power. तो उसकी power का किसी भी तरीके से रिड्यूस ना हो जाए, he has done this in third ड्यूमा में उसने मोस्टली कंजर्वेटिव्स को ले लिया. जस्ट अ मिनट. Yeah, so this is his cleverness which he has done in the parliament. So दिखाने के लिए उसने parliament जरूर accept की थी, but actually nothing happened with that also. तो उस टाइम के लिए तो उसने प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया. अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ही थॉट. देन नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे, ये तो था जो अभी तक हमने डिस्कस किया. इट वाज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन. एग्जैक्टली इट वाज नॉट द रेवोल्यूशन. अगर आप देखोगे तो रशियन रेवोल्यूशन को हम
मतलब ये इसको कोई रेवोल्यूशन बहुत बड़ा नहीं मानते. It was just a change, a protest against the Tsar, and few of the changes that was accepted by the Tsar. ये इतना ही था, but still हम इसको ये मान सकते हैं that this was the first effort done in Russia to remove monarchy. मोनार्की को हटाने के लिए रशिया में जो पहला एफर्ट किया गया था, दिस वाज दिस 1905 एफर्ट दैट वाज बीइंग डन, जिसके अंडर दो तीन चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है कि 1905 से पहले सिचुएशन क्या थी, आपने पढ़ी थी. Which two factors were there that had this created this kind of revolution? दो फैक्टर्स पढ़े थे ना. 1904 में कुछ हुआ था. What happened in 1904 due to which the people were in anger, due to which that prices and everything was bad crop. Yeah, bad harvest, very poor harvest in the complete Russia. उसकी वजह से क्या हो गया था, prices were getting high, Price are decreasing, and 20% of the real wages had decreased. 20% of the real wages were also reduced, जिसकी वजह से लोग गुस्सा थे. उसी के साथ क्या हुआ था, 4 workers were being removed from the factory just like that without any reason, dismissed from the factory, जिसकी वजह से ये ब्लडी संडे का इंसिडेंट हुआ. और उस ब्लडी संडे की वजह से ये थोड़ा लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और उसी की वजह से ये ड्यूमा का एक सेटअप हुआ. ठीक है. Is it any doubt till here? Else we'll be moving to the First World War and the Russian Empire. रशिया के ऊपर वॉर का क्या इम्पैक्ट? Like so same we discussed it Nazism also ना, हिटलर जर्मनी पे भी इम्पैक्ट हुआ. हर जगह इम्पैक्ट तो होता ही है वॉर का, whether you win or you lose. If you are having any kind of fight, loss will be both ways. The same way the Russian Empire faced a lot in the First World War. So start just to give the background. पूरे वॉर में नहीं, हमें डिस्क्रिप्शन में जाना ही नहीं है, not part of the syllabus. In 1914, when the war broke out between the two European alliances, ये हमने पहले भी किया था. नाजिज्म स्टार्ट करने से पहले आई थिंक वी हैव डन दिस. सेंट्रल पावर्स एंड लाइट पावर्स में जो ये लड़ाई शुरू हुई थी, तो जर्मनी का हमारा यहाँ पे मेन रोल है. अभी हम वी विल बी टॉकिंग अबाउट जर्मनी व्हिच वाज पार्ट ऑफ द सेंट्रल पावर, एंड हियर नाउ रशिया व्हिच वाज पार्ट ऑफ द लाइट पावर. सो बिटवीन दीज टू यू नीड टू रिमेंबर. बाकी सबको कोई खास हमें ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट. In Russia, the war was initially popular and people rallied around the Tsar Nicholas II. So initial time में क्या हुआ था, because immediately when the war started, जैसे 1914 में war start हुई, तो लोगों को शुरू में तो थोड़ा सा ठीक लगा, उन्होंने जार को सपोर्ट किया कि it's for the pride of the nation, it's for Russian pride, we are the Russian citizen, so हमारी pride के लिए they took part in the war, और उन्होंने जार को सपोर्ट किया उस war. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को the same thing, the same consequence that we discussed in the Germany as well. जब आप वॉर में चले जाते हो, धीरे धीरे उसके consequences नजर आते हैं. whether the prices start going high, whether you talk about the government जो डेवलपमेंट करने के बजाय वॉरफेयर में चले जाती है और सारा खर्चा वहां पे हो जाता है, that it accepts. फिर अगर आप वॉर में जाते हो, you have so many casualties, इतने सारे आपके लोग मर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मतलब रहते ही नहीं है, सारा आपका बहुत. जब इधर उधर ये बॉम्ब डलते हैं या आप बाकी लड़ाई होती है, तो कितना ज्यादा आपका एरिया लॉस होता है, रीजन वाइज कितना डिस्ट्रक्शन होता है, राइट. अनएम्प्लॉयमेंट बननी शुरू हो जाती है, लोगों के पास सबसिस्टेंस क्राइसिस आने शुरू हो जाते हैं. ऑल दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एनी वॉर, राइट. सो यहाँ अब लोगों को जब धीरे धीरे ये सब चीजें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने लगे, सो दे थोड़ा सा वो ना, दे जस्ट स्टार्टेड रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन द वॉर. ठीक है. और जार का ये था कि इनिशियली ही जो भी उसकी जैसी मर्जी क्लेवर फॉर्म में बनी हुई ड्यूमा थी, बट थोड़ा बहुत कंसल्टेशन ही हैज डन, बट लेटर इन द वॉर ही स्टॉप डिस्कसिंग एनीथिंग इन द
among the parties or among any kind of political important person, किसी से भी उसने बात करनी डिस्कस करना बंद कर दिया, तो लोगों को वो अच्छा नहीं लग रहा था that Tsar is taking again the autocratically he is taking the decision. So धीरे धीरे क्या हुआ, the support of the people it worth him, लोगों के भी common people also as well as जो हमारे politically important लोग थे उनकी भी थोड़ा थोड़ा support कम हो गई. Another thing, yes Akshay. Yes, ma'am. During this time, ma'am, since before World War One, the Duma which he had made almost had those aristocrat thinking people. So, ma'am, he also lost the support of these people. He started losing the support of these conservatives also, because he was not discussing anything, consulting anything to these people as well as to the parties which were the major parties running over there. किसी से भी उसने ड्यूमा में डिस्कशन बंद कर दी. उसने बोला Yes, मैं आई एम द किंग ओवर हियर, लाइक इट्स रिटन ही रिफ्यूज्ड. So उसने अगर लोगों ने बोला भी तो he then also he refused to consult anyone. So that was very annoying for those people. ठीक है. Another thing, और जो ये अटैक्स हो रहे थे फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, अगर हम जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, जर्मन अटैक्स हो रहे हैं. सो इन रशिया एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन वेरी हाई. ठीक है. कैसे उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब लोगों में इतना गुस्सा था. जो हम रीजन की बात कर रहे थे फ्रॉम पास्ट फ्यू क्लासेस, सेंट पीटर्सबर्ग व्हिच वाज द इंडस्ट्रियल पॉकेट, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ रशिया. तो उन्होंने, क्योंकि वो जर्मन नेम था, तो लोगों को इतना गुस्सा था, उन्होंने उसको भी चेंज किया एंड दे रीनेम्ड इट एज द पेट्रोग्राड. दैट वाज अ चेंज इन द नेम ऑफ द सिटी, जिससे हमें ये समझ में आता है हाउ हेटेड यू हैव फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन. सो जर्मनी के एंटी जर्मनी सेंटिमेंट बढ़ते जा रहे. वन एग्जाम्पल इज दिस, इट्स नॉट अ रीजन, एग्जाम्पल इज दिस. देन वन एक रीजन तो था वॉर अगेंस्ट जर्मनी. ठीक है. सेकेंड रीजन वाज, just one moment, just give me a minute. Yes, so that was, the war was the one reason that Germany was there on the opposite side. Second thing, the Tsarina, जो जार की जो मतलब queen थी जो Alexandra, she was also from the Germany only. ठीक है. अब why people were मतलब why they had a hate kind of feeling for the Tsarina as well, there was a reason. Just a minute. Yes. So Zarina Alexandra, she was from Germany. She had she was from Germany only, and she was not famous among the people of Russia because she used to live the lavish life. Uska jo lifestyle tha, it was very lavish. She had any kind of जो होता है आपके जो lead कर रहा है, whether it's the democratic government right now we have, और if you talk about the monarch, king, queen, जो भी होते हैं, एक थोड़ा सा ये होता है ना कि you will be having some empathy among the people अगर उनको खाने को नहीं मिल रहा है. Subsistence crisis हमने देखा, 1904 का प्रॉब्लम हमने देखा, बैड हार्वेस्ट का, अनएम्प्लॉयमेंट का केस देखा, सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं. एंड द पर्सन हु इज रूलिंग देयर, उनके यहाँ से कोई एम्पैथी की फीलिंग नहीं है. दो आपका पूरा वैसा ही खर्चा चल रहा है द वे यू वर डूइंग अर्लियर, तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं. Alexandra was not at all famous. People used to hate her. So Zarina, because she was from the German origin, तो लोगों को ये एक और चीज थी जो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी. इसके लिए भी वो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स थे. उसके साथ साथ she had one advisor also. और ये जो एडवाइजर था, इसकी भी जो ये एडवाइजेस फॉलो करती थी जरीना, he was also not accepted by the people. ठीक है. So what happened,
इन रीजंस की वजह से टोटली रशिया वाज अगेंस्ट द जर्मनी, देयर वाज एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स दैट वाज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वो बढ़ गए थे जर्मनी से लड़ाई के साथ साथ, ये इश्यूज पहले भी थे. If we talk about this third point, these issues were earlier also. It was there with the people. But वो एक shape लेते जा रहे थे with the advancement of the war. Then what was the impact over there going on of the war in the in Russia? Both in the eastern and western fronts, defeats were shocking and demoralizing. So Russia के जो भी आपका ईस्ट वेस्ट जो भी दोनों तरफ से जो वॉर का इम्पैक्ट आ रहा था, it was also demoralizing for the people. And Russian armies lost badly in Germany and Austria between 1914 to 1916. पहले ही जिस नेशन को आप हेट करते हो उससे हारना और ज्यादा बुरा लगता है. So people were in great anger during this time. ठीक है, that was the kind of feelings among the people. Now, what was happening? What was the condition that was there in Russia during the First World War? There were over 7 million casualties by 1917s in Russia. The Russian troops destroyed everything that might be of use to the enemy, including crops, houses, buildings, etc. If you remember, we discussed in the last chapter also, Hitler क्यों अपना मतलब warfare में believe करता था. When we talked about Hitler, we discussed ना कि वो he always believed in the warfare. He wanted कि warfare पे पैसा लगाया जाए rather than on the development of the nation. Why he wanted to do that? We discussed at that time. Anyone remember? So that he could make use of the natural resources of other countries or any other resources of the other countries. Right. So that he can make use of resources of other countries. एक तो उसका area expand, two way फायदा होता है ना. एक तो आपका area expand हो रहा है, आप बढ़ती जा रही है आपकी power as a nation. दूसरा, expansion के साथ साथ you are able to get so many resources of that nation. अब अगर यहाँ पे अगर रशिया हार रहा था तो उनको क्या था कि कोई और भी हमारे रिसोर्सेज को यूज ना करे. उसके उस डर से, मतलब वो नहीं चाहते थे that any other, like if Germany is there, तो जर्मनी हमारे एरिया में जहाँ पे बहुत अच्छी फार्मिंग होती है उसको कैप्चर करके यूज करना ना शुरू कर दे, तो दूसरों का अच्छा ना हो जाए. उसके लिए व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, रशियन ट्रूप्स ने क्या किया, रशियन आर्मी ने क्या किया, जैसे उनको दिखा कि हम हार रहे हैं, हमारा हर तरफ से मतलब नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने खुद ही अपनी क्रॉप्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स को तोड़ना, खराब करना शुरू कर दिया ताकि वो एनिमी के हाथ में ना चला. So again, the reason being कि जब आप वॉर में होते हो तो आपको अच्छा बुरा समझ में नहीं आता, आप अपने साथ साथ मतलब आप अपने ही साथ गलत करना शुरू कर देते हो, which so that मतलब किसी तरह से वो आपके सामने वाले को खुशी ना मिले. That is what they did. There was no use of it, but still they were doing it. ठीक है, बट उससे क्या हुआ, आप अपने ही रशिया के अंदर के घर तोड़ रहे हो, बिल्डिंग्स तोड़ रहे हो, क्रॉप्स को खराब कर रहे हो, तो इम्पैक्ट किस पे आएगा? द पीपल ऑफ रशिया. इज दैट सो और नॉट? लोग तो है ना, आपके रशिया के ही लोग रह रहे हैं, इम्पैक्ट तो उन्हीं के ऊपर आ रहा है. बाहर का आके आपका सामान खराब करे, आपका पूरा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करे, उस पे ज्यादा गुस्सा आएगा, या घर का इंसान जब खराब करता रहेगा तो उस पे गुस्सा आएगा? Where you will be hurt more? घर का. Yeah. So same, someone from our home. right. So same thing happened here. So, but the destruction of crops and building led to over 3 million refugees in Russia. Soldiers did not wish to fight such war. So soldiers ने कहा हमें ऐसी लड़ाई लड़नी ही नहीं है जो हमारी फैमिलीज पे फैमिली सब खराब होती जा रही हैं, पीपल सड़क पे आ रहे हैं, एक कैंप्स में आ गए. पहले ही सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी जार के अंडर, एंड नाउ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन started happening over there. So people, the soldiers of the Russian army, they refused, we don't want to take part in the war anymore. Same way, continuing with the destruction, economic destruction, the war had severe impact on the industries. और ये जो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होती है ना, हर वॉर की सेम ही होती है. अगर आप देखोगे घुमा फिरा के वही एक चीज होती है, आपका इंडस्ट्रीज खराब हो जाती है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट खराब हो जाता है, ट्रेडिंग खराब हो जाती है, प्रोडक्शन खराब हो जाता है, सब वही चीजें होती है. जब इधर उधर आप तोड़फोड़ करोगे, रेलवे खराब होनी शुरू हो गई, द सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो. So the war had a severe impact on industries, cut off from other suppliers of industrial goods by German control. जो भी अब आपका दुश्मन है उसका कहीं किसी जगह पे कंट्रोल है तो वो आपको आगे से
सप्लाई नहीं देगा, रॉ मटेरियल नहीं देगा, या आपकी मार्केट नहीं बनेगी, यू विल नॉट बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट्स ओवर देयर। तो ये बाल्टिक सी के वहाँ जो रीजन था दैट वाज ऑल कंट्रोल्ड बाय रशिया, तो उन वहां से सारी मार्केट खराब हो गई। Rapid disintegration of industrial equipment. By 1916 railway lines began to break down. जिस रेलवे की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ रहा था, जिस रेलवे की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, वर्कर क्लास बनी, वही रेलवे को की लाइंस को तोड़फोड़ कर दिया गया सारा। So that all destruction took place and industries were spoiled at that time. Able-bodied men were called up to the war, which led to the labor shortage. अब जहाँ जो इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, जिसको देख के ये लगता है कि मतलब he has that kind of caliber, एक physical appearance से that ये war में अच्छा लड़ लेगा, तो उसको नौकरी से हटा के they were just taking in the army, क्योंकि लोग मरते हैं तो you have to get more people into the army. Large supplies of grain were sent to feed the army, which resulted in food shortage for the civilians. बाकी लोगों के लिए food shortage हो गई, so unemployment हो गई, food shortage हो गई, so all those common things that happened. So in cities, bread and flour became scarce, and by 1916 riots common. ये हमने पहले भी पढ़ा था in case of Germany also, कि जब खाने को नहीं मिलता है तो वो जो खाना लेने के लिए, जो ब्रेड्स लेने के लिए उनका स्टेपल फूड है वहाँ पे, उसको लेने के जो लाइंस लगती है वहाँ पे भी लड़ाइयाँ, सब झगड़े शुरू हो गए लोगों में, सिविलियंस के, because of the shortage of the war. Ma'am, the railway line that got disrupted, ma'am, that was because of the own Russian army or because the German soldiers? Both ways. It was there from the enemy also, and it was there by self also. Self-destruction was also there. Russian army और czar का जो mentality थी, उसकी वजह से self-destruction was also there. Okay, that was the impact of the First World War. So again, to make the continuity, फिर मैं repeat कर रही हूँ. Already Russia was under the autocracy under the Tsar Nicholas II. उसकी जो wife थी Alexandra from the German base, दोनों को ही लोग पसंद नहीं करते थे because of the autocracy and the selfishness of the Tsarina. Situation was not good in 1904, though उससे पहले भी अच्छी नहीं थी. हमने देखा कि workers की condition भी अच्छी नहीं थी, as well as the peasants were also facing the issue. Both, whether you talk about workers or the peasants or any other type of people, they were asking for the socialism in Russia. They wanted to have a shared society. 1904 में bad harvest हुआ, prices hike हो गए, workers को निकाला जा रहा था, लोगों ने protest किया. Protest की वजह से bloody Sunday happened. उस bloody Sunday की वजह से और ज़्यादा associations बनी, due to which the Tsar thought कि ये protest बढ़ता जाएगा तो ऐसा ना हो कि मेरे rule में problem आ जाए. So he accepted Duma. Duma accept किया, but it was a clever kind of step taken by the Tsar. So दो बार Duma को dismiss किया गया और third time conservatives को लिया गया उसके अंदर. Then First World War happened. First World War में रशिया की कंडीशन और खराब हो गई. लोग again people went in anger against the Tsar, and then the February Revolution in Petrograd started. Link is clear? As I always Yes, say, history के chapter में link बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े chapter होते हैं कि link भूल जाते हैं. Yes, Pratni. Ma'am, like, ma'am, the king, ma'am, elected, ma'am, conservative in Duma, ma'am, as the things are all in the court. So, ma'am, the conservatives still have the mindset of, ma'am, that monarchy. So, ma'am, why were they not supporting the king? Ma'am, why were they not supporting the Tsar? Ma'am, in the First World War, ma'am. They initially they supported, but we discussed ना यहाँ पे जो लिखा कि we discussed that उसने जो king था, आपने बोला कि I will not discuss anything about the war with you people. He refused ना, ये जो बोला था. Tsar refused So, to insult the main parties in the Duma. So इसलिए उनको लगा कि though they were conservatives, लेकिन अगर आपकी कोई insult करेगा या आपको कोई importance नहीं देगा, so वो चीज उनको अच्छी नहीं लगी कि why can't Tsar have
the discussion in the parliament before taking any action in the board. Okay, ma'am. That was the only reason. Otherwise, conservatives को और कोई problem नहीं. Okay, ma'am. ठीक है. Now talking about the Petrograd. Petrograd was earlier. अभी हमने देखा था नाम change हुआ था. Petrograd. Petersburg. सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह थी उसी को उन्होंने नाम चेंज किया था पेट्रोग्राड बिकॉज इट वाज अ जर्मन नेम. So in winter of 1917 conditions of the capital Petrograd were grim. खास अच्छी नहीं थी. अब जो जब जो ये important city थी कैपिटल उसकी जो लेआउट था किस तरह से था. देयर वाज अ डिवीजन इन द एरियाज. ठीक है. वन वाज द राइट बैंक, वन वाज द लेफ्ट बैंक. लेफ्ट बैंक में था आपका विंटर पैलेस जो किंग का, उसी के साथ उसकी जो भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर देयर, उसी के साथ ड्यूमा वाज देयर, और जो भी आपके फैंसी प्लेसेस थी दैट ऑल वाज देयर इन द लेफ्ट बैंक. और राइट बैंक में होते थे वर्कर्स क्वार्टर्स, उनकी रहने की जगह, जो भी कॉमन पीपल, फैक्ट्रीज, ये सब यहाँ पे लोकेटेड थी. सो देयर वाज अ डिवीजन ओवर देयर between in that particular city. The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people. So it was a clear visible division among the people which was visible in this in the city. ठीक है. इसके meeting is also about to end. So before it ends, I'll just इसके आगे का फिर हम कल से start करेंगे. What was the condition in the Petrograd? क्या food shortage हुआ, फिर से crop failure हुआ, how the people suffered at that time in that, and उसके बाद some series of events happened. ये 22 February, 23rd February, 24, 25, 27th February. This was the actual revolution that started after 1905. नेक्स्ट 1917 फरवरी में ये रेवोल्यूशन दोबारा स्टार्ट. उसके पीछे क्या थे, विल डिस्कस दैट इन द फॉलोइंग क्लास.